Sister Reena, please pray and start. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ ദിവത്സലമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ, എന്നുള്ള സമയത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഈ സന്ധ്യാസമയം വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്ന ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ കർത്താവെ കടന്നു വന്നവരെല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വചനം പഠിച്ച് നിശ്ചയം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിശാലതയ്ക്ക് വേണ്ടി, വിസ്തൃതിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവെ ഞങ്ങളാൽ ആവോളം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഒരുക്കിയെടുക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി അധികം ഫലം കായ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ കോളേജിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദൈവം സഹായിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന് പിൻപിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ടീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേക കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന വർഗീസ് പാസ്റ്ററിനെ ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സാറിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞു തരുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ വചനം പഠിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ഒരുക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആദിയോടന്തം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ നിയന്ത്രിച്ച് നടത്തുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കടന്നു വന്ന എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം, യേശുവിന്റെ തന്നെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Amen. സ്തോത്രം. Thank you, sister. Praising once again the name of the Lord this evening, and greetings to all of you in Jesus' name. It's wonderful to be together once again as a class, and I know it's not that easy for at least some of you to attend regularly, but still you make it possible, and therefore thanking God for you all too. May the Lord bless you. We will continue with our studies. We have been looking to the doctrine of God, the theology of the Bible, the theology of Christianity, or the Christian theology, we can say, is very unique in all of its aspects. Especially we saw last week that the theology the Bible presents, or the teachings of God the Bible presents, or the very God Bible reveals, is a triune God. One Godhead, and having three persons in that one Godhead, of the same substance, of the same eternity, of equality in everything. Neither of these three persons in one Godhead is superior or inferior to other. Okay, and that was what we learned last week. Triune God, or the triunity of the God of the Bible. So it is very unique. This teaching is quite unique. No religion, no sect, no scripture other than the Bible and Christianity teaches or presents such a God. And this triunity is very much essential for God to be God. Okay, this triunity is
quite essential for God to be God. Because God is eternal. God is eternal. And there was nobody, there was no creation, there was no person, there was no creature when God was there present in the past eternity. Okay. And the Bible says God is eternal as well as God is love. God is love. I'm just taking one aspect. God is love. What is love actually? Love is an emotion to be given and to be taken. Okay. And First John chapter 4, verse 8 and 16. Okay. Both these verses say that God is love. God is love. And there comes a question. God is love, and there was a long duration. We don't know how many billions or trillions of millenniums were there. We don't know. It's quite foolish to understand the duration of the past eternity, okay, which we call Anadi, which we call Anadi. That means before the beginning of the beginning. Following me? Before the beginning of beginning. If you find any difficulty, please ask me, okay? Before the beginning of the beginning, there was eternity, and that is called the past eternity, the past eternity. Eternity past. We do not know for how many years, decades, centuries, millions or billions or trillions of sometimes millenniums covered in that past eternity. We do not know. But the question, if God is love, if God is love, then the question, when there was none with God in the past eternity, whom did he love? Okay. In the past eternity, whom did God love? Because love cannot be static or stable. It is such a force that always should be in momentum, in movement, give and take. So I think you follow me. Following me? Yes? Yes, sir. So when God is eternal and he was in the past eternity and he was all alone. He was all alone.
Okay. The question, whom did he love? Who did love him? परमेश्वर सनातन है, परमेश्वर अनादि से हैं। अनादि में परमेश्वर के सिवाय और कोई नहीं थे। इस अनादि से अनंत काल तक रहने वाला सनातन परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 के 8 के आखिरी, 9 की शुरुआत और 16वां पद ये सब बताते हैं। तो प्रश्न यह है कि यह ईश्वर जो प्रेम है, अनादि में हमें नहीं मालूम कितने हजारों और कितने अरबों साल तक उस पास्ट इटर्निटी की अनादि चला, हमको नहीं मालूम। उतने सारे सालों में परमेश्वर किससे प्रेम किया, किसको प्रेम किया और परमेश्वर से किसने प्रेम किया? जल्दी। पिछले हफ्ता हमने सीखा कुछ ऐसे और धरती पर धर्म है, मजहब है, जो एकमात्र परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। वे एब्सोल्यूट मोनोथिस्टिक बिलीवर्स हैं, केवल एक ही ईश्वर, दूसरा कोई नहीं। तो उनसे हमारे सवाल है, अगर तुम्हारा परमेश्वर सनातन है और तुम्हारा परमेश्वर प्रेम है, तो अनादि में परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाने से पहले परमेश्वर का प्रेम किसके साथ उसने बांटा था? With whom did God share his love? This is our question to absolute monotheistic believers. But we have an easy answer according to the Bible. We have an easy answer. Okay. That means a selfish love. തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു Yeah, the Bible doesn't have a problem in solving or answering this question because Bible presents a single God with 3 persons within. So the love fellowship, the loving communion within the Holy Trinity, okay, the loving communion within the Holy Trinity, within the Holy Trinity solves this major issue. The Father loved the Son. The Son loved the Father. The Father loved the Holy Spirit. The Holy Spirit loved the Son of God. The Son of God loved the Holy Spirit. That means a loving communion between or within the Holy Trinity makes this issue a very simple thing
to solve within the Bible. Okay, you can just read John chapter 17. John chapter 17. And verse 4, please. In any language you can read. ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തി നീ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി തികച്ചിരിക്കുന്നു. Yeah, verse 5 also. ഇപ്പോൾ പിതാവേ, ലോകം ഉണ്ടാകും മുൻപേ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. And verse number 24 also. പിതാവേ, നീ ലോക സ്ഥാപനത്തിനു മുൻപേ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് നൽകിയ മഹത്വം നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളവർ കാണേണ്ടതിന് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് അവരും എന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. See, in verse 5 we read the glory, the majesty, the splendor Jesus had with the Father even before the world began. Okay, following me? Jesus had glory, splendor with the Father even before the world began. And in verse 24, it says, the Father had loved the Son. When? Even before the world was, even before the foundations of the world, even before the world was founded. Following me? See, that's why we read God's love is eternal, not only unending, but it is eternal. So all these things prove that the true God is a God, a one and single God, one and single Godhead, but existing in three distinct persons named the Father, the Son, and the Holy Ghost. Okay. So we read or we know about the triunity of God. Okay, the triunity of God. And this was a progressive revelation in the Bible. Revelation of God in the Bible actually is a progressive revelation, not all of a sudden. As we read in Hebrews 1 and verse 1. Hebrews 1 and verse 1, please. ദൈവം പണ്ട് ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ടും പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം പിതാക്കന്മാരോട് അരുളി ചെയ്തിട്ട്. Yeah, next verse also. ഈ അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രൻ മുഖാന്തരം നമ്മോട് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവനെ താൻ സകലത്തിനും അവകാശിയാക്കി വെച്ചു. അവൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെയും ഉണ്ടാക്കി. Thank you. So here in the first verse, it says, how did God reveal himself? How did God
speak to our fathers. परमेश्वर की प्रकाशन किस प्रकार था यहां बताया. God spoke to the fathers. How? Not in its fullness, but how? Yeah, unmute and you can speak. It was not a final or a fuller revelation until Jesus Christ came. Okay. To the fathers, God spoke in many separate revelations. Okay. This is what the amplified version of the Bible says, in many separate revelations, each of which set forth a portion of the truth. And in different ways, God spoke to the fathers, forefathers. So in many different ways and in part by part. So divine revelation in the Bible, not only in the Bible, but in the history, was progressive. Okay. And Jesus Christ is the last and the final revelation of God. Jesus Christ is the last, final, and fuller revelation of God. So it was in Jesus Christ this revelation was consummated. But from the very beginning, okay, from the very first verse of the Bible speaks of a God in plurality and in unity, as we saw last week from Deuteronomy 6 and verse 4. Okay, there we saw three things of God: the eternity of God, the plurality of God, and one more thing. Anybody? Unity. Yes, the unity of God. Three things. The name Yahweh shows the eternity of God. Elohim, God, proves the plurality within the person of God. And God is one. The statement God is one proves the unity of God. Okay. So in the same way, from the very first verse of the Bible, Genesis 1:1 itself is a declaration of plurality of God in one and single Godhead. Right? So the biblical revelation of the Trinity, we can say it was progressive. It was progressive. It was a progressive revelation. Okay. Triunity. Okay. Triunity. This word, Trinity or triunity, that word never found in the Bible. The word is an invention of the students of the Bible for easy analyzing of the theme.
Okay, if you search the word Trinity or Triunity in the biblical concordance or in the biblical dictionary, you will not find. Okay, but that doesn't simplify, or that what do you say, doesn't dilute the seriousness of the doctrine. Okay, so Trinity or Triunity or three in oneness. So these are very important words in Christian theology. Okay, in verse 1 itself, Genesis 1 itself, there also we see, in the beginning God. God is again Elohim there. Elohim, as we saw last week, it's a plural usage. Okay, plural usage. So the very first verse itself shows God as a 3 in 1. Okay, 3 persons in one Godhead. Okay, and also Genesis 1:26 we see God says, let us make man, let us. So बाइबल के अंदर त्रिएकत्व की जो प्रकाशन है वह एकदम से हम नहीं देख सकते हैं, परंतु वो प्रकाशन अंश अंश होकर प्रकट होते जाता है। तो परमेश्वर का प्रकाशन प्रति समय या धीरे धीरे प्रकट होते जाने वाला एक प्रकाशन है। लेकिन उत्पत्ति एक से लेकर ही परमेश्वर की त्रिएकत्व के बारे में हम समझ सकते हैं। उत्पत्ति 1:1 में परमेश्वर करके जो अनुवाद किया है वो मूल भाषा में एलोहीम है। एलोहीम हमने पिछले हफ्ता ही देखा, परमेश्वर के लिए बहुवचन में इस्तेमाल होता है। तो उत्पत्ति 1:1 में ही हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर में एक से अधिक व्यक्ति या व्यक्तित्व हाजिर है। 1:26 उत्पत्ति में जब आते हैं तो उधर भी परमेश्वर कहता है वो हम अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाए। हम, let us make man in our own image. So there also we see plurality. God speaks in plurality. Genesis 3:22 again we see, उत्पत्ति 3:22 में भी हम पढ़ते हैं, behold the man has become like one of us. Become like one of us. मनुष्य हम में से एक के समान हो गया है, परमेश्वर कहता है। The same thing we see in Genesis 11 and verse 7. उत्पत्ति 11:7 में भी हम उसी प्रकार देखते हैं। ठीक है। और in Psalm number 45 verses 6 and 7 we see the same. There also Elohim is used. Okay. तो भजन संहिता 45 उसका 6 और 7 में भी हम इन्हीं बातों को देखते हैं। ओके, सो इस प्रकार बहुत से वचन हैं जहां हम परमेश्वर की त्रिएकत्व के बारे में
देखते हैं। And another thing about triunity is, first thing we saw today is it was a progressive revelation, especially in the Old Testament, but it was there from the very first words of the Bible. And second thing now we see is this revelation of triunity is consummated, fulfilled in the New Testament. Okay, it is more complete in the New Testament. लेकिन नया नियम में ये त्रिएकत्व की प्रकाशन और भी प्रकट है। नया नियम में और भी अच्छे से परमेश्वर ने अपने त्रिएकत्व के बारे में बताया है। Okay, that is very much evident in the very birth of Jesus. Okay, at the very birth of Jesus, it is very much evident. प्रभु यीशु मसीह की जन्म के समय में हम उस बात को बहुत ही अच्छे से देखते हैं, बहुत ही अच्छे से देखते हैं। देखिए लूका पहला अध्याय और उसका 35वां पद, लूक 1:35। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും, ആകയാൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധ പ്രജ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. There itself we see the revelation of Trinity. The Holy Spirit, okay, is there, or the Most High God is separately stated over there, and a son born, the Son of God is also there. The Father and the Holy Spirit and the Son of God who will be born of the Most High God the Father through the power of the Holy Spirit. Very evidently, triunity is there. Another occasion in the New Testament is at the baptism of Jesus Christ. तो यीशु मसीह के जन्म के समय में लूका 1:35 में बताया कि परमेश्वर का सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह की जन्म के समय में कैसे इस्तेमाल होता है। तो पिता को, पवित्र आत्मा को और पुत्र को हम वहां पर देख सकते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की बपतिस्मा के समय में भी यीशु मसीह पुत्र बपतिस्मा लेकर पानी से ऊपर आ रहा है। पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह पर उतर आ रहे हैं। आकाशवाणी परमेश्वर पिता का वाणी या परमेश्वर स्वर्ग से बातें कर रहे हैं। ओके, so at the baptism of Jesus Christ also evidently we see the triunity. Okay, the triunity. The Son of God is baptized and standing still in Jordan or at the bank of Jordan. The Holy Spirit is descending upon him and the Father is speaking from on high heaven. So that's why we often say
Baptism is so important that it is an occasion that triune God is unitedly seen. Okay, so it's so important ministry. It is so important ministry. Okay, so at baptism of Jesus Christ, we see. Then when it goes on and goes on, Matthew 28:19, again at the Great Commission, there also we see Jesus Christ asked his disciples to baptize in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So in the New Testament, this revelation of triunity is very much evident, and we can see it is very much complete in the New Testament. And Paul the Apostle gives the benedictory blessing in 2 Corinthians 13 verse 14. 2 Corinthians 13:14, दूसरा कुरिन्थियों 13 का 14वीं वचन में पौलुस प्रेरित का आशीष का वचन हम देखते हैं, जो अक्सर हम लोग भी बोलते हैं. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. आशीष का वचन में हम लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहें. पौलुस ने बताया उस वचन से हैं हम अक्सर आशीष का वचन जो बोलते हैं. सो द benedictory blessing, there also we see the triunity of God. So there are so many other portions. When we come to the book of Revelation, we can see it. Revelation chapter 1, verses 4, 5, and 6. Revelation chapter 1, verses 4, 5, and 6. There also we see the triune God. The one who is, was, and to come is about the Father. Okay. Then it says the 7 spirits of God at the throne of the Father. That's about the Holy Spirit. The Holy Spirit. Then we see Jesus Christ. There is an elaboration of this of Jesus Christ given there. So प्रकाशित वाक्य 1 का 3, 4, 4, 5, 6 में हम देखते हैं, वहां लिखा है जो है, था और आने वाला वो पिता है, और उसके सिंहासन के पास की 7 आत्माएं पवित्र आत्मा है, और उसके बाद लिखा है यीशु मसीह की ओर से, यीशु मसीह के बारे में भी बताया है. ओके, सो प्रकाशित वाक्य के अंदर भी हम त्रिएक परमेश्वर को देख सकते हैं. वैसे ही प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में भी, 5वें अध्याय में भी हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं.
ठीक है, और 5वां अध्याय में जब आएंगे, when we come to the 5th chapter of Revelation, there also we see the triune God. 5वें अध्याय में यह है, पहला पद में सिंहासन पर बैठा हुआ पिता परमेश्वर, the Father is enthroned in verse number 1. Okay, and in verse number 6 we see Jesus Christ as the slain Lamb of God, receiving the book, the 7-sealed book from the Father. पिता परमेश्वर से 7 मोहर की किताब लेते हुए पुत्र को हम 6वां पद में, not in 5 but in 6, 6वां पद में हम देखते हैं. And the same verse again we see the Holy Spirit with 7 eyes, or a 7-fold fullness of the Holy Spirit is also seen over there. So the Father is seated on the throne. The Holy Spirit is always associated with him in chapter 1 verse 4, and also in chapter 5 verse 6. And the Son of God is standing separately, receiving the 7-sealed book from the Father who enthroned in the middle. So in all these places in the New Testament, we see the fuller revelation of the triunity of God. Okay. So far, I think you follow me. शायद आपको, मैं सोचता हूं कि समझने में कठिनाई नहीं है. ठीक है. Now, one more thing about this triunity. 3 important statements. 3 important statements about the triunity of God. First statement, God is, thank you, God is 3 persons. There are 3 important statements about the triunity of God. First statement is God is 3 persons. Okay. त्रिएकत्व के बारे में 3 प्रस्तावनाएं, 3 घोषणाएं, 3 वाक्य मुख्य तौर पर. उसमें से पहला घोषणा है, परमेश्वर 3 व्यक्तियां हैं. 3 व्यक्ति हैं. परमेश्वर 3 व्यक्ति हैं. सेकंड स्टेटमेंट, ईच पर्सन इज फुली गॉड. ईच पर्सन इज फुली गॉड. दूसरी बात यह है कि ये जो 3 व्यक्ति है परमेश्वर में, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति पूरा परमेश्वर है. प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर में, जो प्रत्येक व्यक्ति पूरा परमेश्वर है. And the third sentence, third declaration, but there is only one God. But there is only one God. परंतु परमेश्वर एक ही है. ठीक है.
तीन प्रस्तावनाएं, परमेश्वर तीन व्यक्ति हैं या परमेश्वर में तीन व्यक्तियां हैं। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति पूरा पूरा परमेश्वर है। तीसरी बात, परंतु परमेश्वर एक ही है। ओके, God is three persons. Each person is fully God, but there is only one God. Okay, there is only one God. These three statements are very much important for understanding Trinity. Okay. As I told you last week, never ever try to simplify the truth, the mystery of Trinity with any analogy, any parable. Okay? किसी भी दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर की त्रिएकत्व की हल करने की कोशिश नहीं करें। ओके, कोई भी ऐसी एनालॉजी नहीं है, दृष्टांत नहीं है त्रिएकत्व को पूरा पूरा प्रस्तुत कर सके। नो, इसलिए कभी उस व्यर्थ परिश्रम नहीं करें और गलत हो जाए, कभी नहीं। ओके, so there are so many heretical teachings, but because of the lack of time, we do not go there. If you got any doubts so far, you can ask, otherwise we will move to the doctrine of the Son. We will get into Christology. अगर आपको इसके बारे में कुछ खास शक हो तो आप पूछ सकते हैं, यदि नहीं तो हम यीशु मसीह के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, पुत्र के बारे में। उसको क्रिस्टोलॉजी बोलते हैं, द डॉक्ट्रिन अबाउट द सन ऑफ गॉड। जैसे शादियों में बोलते हैं आपके चुप रहना कोई शक नहीं है, इस बात की प्रमाण है, तो मैं आगे आपकी चुप्पी के साथ में जाना चाहता हूं। ठीक है, so now we will get into next topic, doctrine about the Son, otherwise Christology. प्रभु यीशु मसीही के बारे में हम अभी देखेंगे, या मसीही सिद्धांत हम बोल सकते हैं। मसीहा सिद्धांत, मसीही नहीं, मसीहा सिद्धांत, यीशु मसीह के बारे में। Again, I have a question here. Doctrine about the Son. Yeah. A question again being repeated about the decree of our faith
or the declaration of our faith, or the confession of our faith. हमारे विश्वास की घोषणा के बारे में एक सवाल मुझे करना है, वो है, हमने देखा था विश्वास की घोषणा में पहला घोषणा क्या था, याद होंगे ना आपको? The first declaration of our faith. Anybody remembers? Faith in Bible. Pardon? Faith in Bible. Yeah, faith in the Bible. What was that? What do we believe in the Bible? Sister Reena was to tell something. In any language, it's okay. In any language. Hindi, English, Malayalam. That it is written word of God. Okay. 3 key things are there. Jesus is our 3. Savior, He is the Son of God. Revelation, inspiration, and illumination. Yeah. The key thing is 3 particular declarations about the Bible. The Bible is the Word of God, inspired, inerrant, and infallible. Okay, that was the first declaration of faith. विश्वास के पहला घोषणा यह था कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और कभी गलत नहीं हो सकता है और बदल नहीं सकता है। ठीक है, what was the second declaration? Second declaration of our faith. हमारे विश्वास की दूसरा घोषणा। Anybody? Yes, Pastor, there is one God, and He exists in 3 spirits. Is that correct? Not in 3 spirit. 3 person? Trinity. Yeah, we believe in, or otherwise there is only one God existing eternally in 3 persons, namely the Father and the Son and the Holy Spirit. Yeah. So this is the second declaration. You can never forget it, okay? And the third one, do you know what is the third declaration? Faith in Lord. Pardon? Faith in Lord. Means? We should believe in Lord. Yeah, we believe in Lord, but what is that faith? There are so many crores of people believing the Lord, but which Lord, what Lord, how, what is our faith in Him? So that is important. Jesus is the Son of Lord and our Savior. Yeah. So
it is a bit long statement, the third one. Okay. So that is the third statement of our faith is about the Son of God. हमारे विश्वास की जो तीसरी घोषणा है वह प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, या फिर पुत्र परमेश्वर के बारे में, या हमारे जो है तीसरी घोषणा है विश्वास का, वो मसीहा सिद्धांत के बारे में है. So our declaration of faith, the third declaration is about Jesus Christ. I will just read it out for you. We believe that Jesus Christ is the only begotten Son of the Father, conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, that Jesus was crucified, buried, and raised from the dead, that he ascended to heaven and is today at the right hand of the Father as the intercessor, and that he will come again soon for the salvation of the righteous and the condemnation of the unrighteous. Okay, understood? This is the third declaration of our faith, that we believe in Jesus Christ. He is the only begotten Son of the Father. यीशु मसीह के बारे में हमारा विश्वास क्या है? हमारे विश्वास का निचोड़ यह है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर पिता का एकलौता पुत्र है, जो कुंवारी मरियम के द्वारा या कुंवारी मरियम में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ था. ठीक है. We believe that Jesus Christ is the only begotten Son of God, conceived of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. कुंवारी मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुआ परमेश्वर पिता का एकलौता पुत्र है यीशु मसीह. यीशु मसीह. और that Jesus was crucified, buried, and raised from the dead. यीशु मसीह मारा गया था, गाड़ा गया था और फिर से मुर्दों में से जिलाया गया था. That he ascended to heaven and is today at the right hand of the Father as the intercessor. कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिया गया था
और पिता परमेश्वर के दाईं ओर अभी ओके पिता परमेश्वर के दाईं ओर अभी हमारे लिए बिचुआ बनकर उपस्थित है, मध्यस्थ बनकर, that he will come again soon to collect the church to himself, or for the salvation of the righteous and the condemnation or the judgment of the unrighteous. कि प्रभु यीशु मसीह अपने धर्मियों के उद्धार के लिए तथा अधर्मियों को न्याय करने के लिए जल्दी आने वाला है। ये सारी बातें आप विश्वास करते होंगे ना? Praise God. सर हाँ, ओके। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये हैं हमारे विश्वास, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ओके, तो आप जानते होंगे यीशु नाम का मतलब क्या है? वेरी सिंपल, the name or meaning of the name Jesus. Savior. God is with us. No. Savior. Yes, yes, Savior. What is Christ? Yeah, Christ means anointed one, Abhishek. Okay. Jesus means उद्धार करता, मत्ती 1:21, Matthew 1:21. Jesus means Savior, one who saves human beings from their sins. And Christ is the English translation of the Greek name Christos. Okay, the Greek equivalent is Christos. And the Hebrew equivalent is Messiah, Masih. यीशु मसीह, मसीह का जो मतलब है इब्रानी भाषा में मसाया, उसी को हम इब्रानी भाषा के हिसाब से ही हम लोग मसीह कहते हैं। उसका यूनानी भाषा में क्रिस्टोस कहते हैं। दोनों अर्थ एक ही है, भाषा दो है। ओके, दोनों का एक ही मतलब है अभिषिक्त, अभिषेक किया गया। ओके, अभिषिक्त। So Jesus is the Savior. Christ means anointed one, anointed one.
Then we know another name is Emmanuel. We know the meaning, no? Emmanuel means God with us. yeah, God with us, or God is with us. And the summary of the doctrine of Jesus Christ already we have seen. And one more summary I would just like to give you. One more summary about the doctrine of Jesus Christ is this. Jesus Christ was fully God and fully man in one person. Jesus Christ was fully God and fully man in one person, and will be so forever, and will be so forever. यीशु मसीह के बारे में जो शिक्षा है, सिद्धांत है, उसका निचोड़ है। पहले हमने थोड़ा सा विशालता में देखा, और अभी थोड़ा सा और कम शब्दों में यह है कि यीशु मसीह एक ही व्यक्ति में पूरा पूरा परमेश्वर और पूरा पूरा मनुष्य था। यीशु मसीह एक ही व्यक्ति में पूरा पूरा परमेश्वर और पूरा पूरा मनुष्य था, और वैसे ही हमेशा के लिए रहेंगे भी। ओके, वैसे ही परमेश्वर हमेशा के लिए रहेंगे भी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह पूरा पूरा ईश्वर था या आधा ईश्वर और आधा मनुष्य था? जल्दी जवाब दीजिएगा। पूरा पूरा मनुष्य पूरा पूरा परमेश्वर था या 50-50 था जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया था तब? Both, because as a man he felt hunger and thirst, and as God he had authority to forgive sins. That's what Okay. I feel. Okay. Somebody else? പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവം. ഷീല സിസ്റ്റർ വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ഇങ്ങെത്തിയില്ല. ഇതിൽ കാണിച്ചു ഷീല സിസ്റ്റർ. പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവും. ഓക്കെ, പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും പൂർണ്ണ ദൈവവും. പാപമൊഴികെ സകലത്തിലും മനുഷ്യനായും പൂർണ്ണമായി ദൈവപുത്രൻ. Okay, that means all of you agree that when Jesus was in his body, in his physical body down here on earth, was fully God and fully man. Yeah, never ever be in error to simply say, yeah, Jesus was half God and semi-God and semi-man. No. In the person of Jesus, in the single person of Jesus, he was fully God and he was fully man. So divinity and humanity
both were in its fullness in Jesus Christ. Okay. One more important question. Okay. Jesus was fully God and fully man while he was here on earth. And what about now? ठीक है, यीशु मसीह संपूर्ण ईश्वर भी संपूर्ण मनुष्य भी था पृथ्वी पर रहते समय. ठीक है, मान लिया. अभी का हालत क्या है? अभी fully God. Fully God alone or fully man alone, or still he is fully God and fully man, or now he is half God and half man? Yes. One answer, God is fully God. Manushaputran means, what do you mean by only man? No, God also. God also. That means fully God and fully man. Yes. Okay. I agree with Sheila ma'am. Fully God, fully man. That's what we started with, because the summary you provided, that will be so forever. Yeah. I had to ask this question before I give you the summary. But even after giving summary, I just try you. Whether you gave your concentration, your mind to what you wrote and heard. Just to try that. Yeah. Jesus was fully God and fully man while he was on earth. Even after his resurrection, he was the same. Even after the ascension, he is the same, fully God and fully man. Even through the eternity, he will remain so. Praise God. Okay, you agree? No doubt, no? Yeah. So many people think Jesus was half God and half man while he was living on earth. Also, so many people think that now, after the ascension, Jesus is now fully God. No. I used to state this statement from some theologians that Jesus' humanity was not a subtraction of his divinity, but Jesus' humanity was an addition to his divinity. Understood? Jesus' humanity was not a subtraction of his divinity, but an addition to his divinity. यीशु मसीह की मनुष्यत्व का मतलब यीशु मसीह की परमेश्वरत्व को घटाने की बात नहीं है, परंतु यीशु की परमेश्वरत्व के साथ यीशु मसीह की मनुष्यत्व की जुड़ाई होता है, घटाई नहीं. ठीक है. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെ കുറവല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറവല്ല. പകരം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം എന്നുള്ളത് തന്റെ ദൈവത്വത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടതാണ്. യേശുവിന്റെ മനുഷ്യത്വം കൊണ്ട്
യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തിന് ഒരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണമോ ഉയർപ്പോ സ്വർഗാരോഹണമോ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ ഒരു രീതിയിലും ഇല്ലാതാക്കുന്നുമില്ല. Okay? Understood these things? Another thing. When Jesus came to this world, we often call it incarnation. Or in Indian language, it was called avataram ya avatara. What is your opinion? Was Jesus an incarnation? Was Jesus an avatara? क्या यीशु मसीह एक अवतार था? जैसे हमारे अक्सर गानों में है, प्रचारों में है, लेखों में है, यीशु मसीह अवतार है करके। आपका क्या विचार है? യേശു ക്രിസ്തു അവതാര പുരുഷനാണോ? No. Anyone else? Something else? അല്ല. അല്ല. Suman brother wanted to say something. ജഡാവതാരം എടുത്ത് താന്ന വേഷത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വന്നു. ജഡാവതാരം എടുത്തെന്ന് ആരായി പറഞ്ഞത്? ആ പ്രയോഗം ശരിയാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ബൈബിളിൽ എവിടെയെങ്കിലും അവതാരം എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? Anywhere in the Bible do we see avataram, avatar or incarnation? You cannot find incarnation or avataram in the Bible. Okay? Instead, of course, the Bible says the word became flesh. Became flesh. Never ever understand Jesus Christ as an avatara purushan. Jesus is not an avataram. He is not an avatar. What is the problem? Yeah, the word became flesh, John 1:14. Also in the book of Colossians, we see it. But what is the meaning of avatara? Especially being Indians, we should understand the word avatara or incarnation. In India, I think all the avataras were in India. Yeah. But there are innumerable avatars. And there are 10 most important incarnations. 10 most important avatars. But what is the problem with avatara? What is the problem we have with the word avatara? In Indian context, no incarnation or no avatar is final. No avatar, no incarnation achieved the purpose fully. No incarnation or avatar has
an eternal validity. And that's why it is being repeated time to time. It is being repeated time to time. But how about Jesus Christ? Was Jesus, let me just now use the same word, incarnation. Was Jesus' incarnation final and fully accomplished the purpose? Or it was incomplete and could not accomplish the purpose? Come fast, please. Because time is over, I have to now get into our regular class. So sorry. So the purpose was fulfilled, but still I am not comfortable with using the word incarnation. But the purpose was fulfilled. He was sacrificed for all of our sins on cross. Then he was resurrected and descended to heaven. If Jesus became flesh was once, or it will be repeated time to time? What I think is no repetition. It's just once. Jesus came to this world, or he became flesh, and the effect was only for a particular group of people or for all? For all. One more question. Jesus became flesh, and the effect or the result is only for a limited time or forever? Eternity. These three differences we have to notice. He don't come. Pardon? Pardon? Deepak brother, क्या बोले? Till second coming of Jesus. That's what Deepak brother said, I think. Okay. All the incarnations, see, they were only for a limited group of people. They were only for a limited time duration. And therefore, the incarnations, the avatars will be repeated time to time, again and again. Okay. But remember 3 words about Jesus' mission. Jesus becoming flesh. Jesus becoming flesh, or Jesus revealing his flesh, his crucifixion, his life and his ministry, everything was for once, only for once, and for all, and forever. Okay, these 3 words always remember. Because time is over, I don't want to extend this. God willing, we will discuss it in the next. Okay, 3 things. And I suggest you to go through at least Hebrews chapters 9 and 10 for these 3 things. Hebrews chapters 9 and 10.
we can summarize the difference between avatars and Jesus Christ becoming flesh. Jesus came and he died, he rose again for only once and for all and forever. Okay? And forever. Okay, let me just conclude now. God be with you all. Time is over for me because our class begins by 8:30. Now people have already joined. It's a daily class we have, and that's why we have this special time from 7 to 8:30. Thank you for your cooperation, and we will conclude with a word of prayer.